Hello, everybody. Welcome back to ACCA classes. Now, today we'll be studying the sixth chapter, which is external analysis, political and legal factors. Now, without wasting any time, let's get started. Right. So, first of all, okay. Now it says political and legal factors, but before this, there is basically an acronym which is very important for you. That is called as PESTEL, or people call as PESTLE also. Right. Okay, so first of all, what is PESTLE analysis? Now, for an organization, there are various kind of external factors which are very uncertain and they cannot really measure it, right? Now, here comes the PESTLE analysis. Now, PESTLE stands for, so P stands for political, E stands for economical, S stands for social, T stands for technological, L stands for legal and E stands for environmental, right? Now, ये होते क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को असेस करना रहता है, तो वो कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स तो बहुत अनसर्टेन होते हैं, तो कैसे मेजर करेंगे? थ्रू दिस मेथड, राइट? सो टुडे विल बी ओनली बी स्टडिंग पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, और जो भी बाकी सारे फैक्टर्स है वो दूसरे दूसरे चैप्टर में आते जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल फैक्टर्स होता क्या है? ठीक है, सो फिर हम पी करने वाले। सो political systems होगा इसमें। So what do you mean by political systems? It comprises of mainly three parts. First one is institutions. Institutions का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे हो गया पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट एंड कोर्ट्स, ठीक है। सेकेंड वन इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल, इफ यू आर समवन who's watching from India, then it is BJP or Congress, right? Third one, just a second. Third one is what? Interest groups. Okay, now how are these three related? ठीक है, हम ये समझेंगे पहले ये तीन रिलेटेड कैसे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या? इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, जो पार्लियामेंट्स और कोर्ट्स, तो जो कोर्ट्स होते हैं, तो बेसिकली वो करते क्या है? स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है, हमको तो ये पता है। और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेस्ट ग्रुप में काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। मतलब कैसे, आप समझिए। जैसे आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे इंटरेस्ट, सपोज एक ट्रेड यूनियन ले लो, और एक अभी इलेक्शन होने वाला है। सो जब इलेक्शन होने वाला है, सो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज, जब अगर एक सपोज एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट होती है, उसके प्रोबेबल चांसेस बहुत हाई है, तो ट्रेड यूनियन क्या डिमांड करेगा? जो इंटरेस्ट ग्रुप है, विच इज, सो इंटरेस्ट ग्रुप का एग्जांपल मैं देता हूँ, ट्रेड यूनियन। सो व्हाट विल ट्रेड यूनियन डू? So basically trade union will demand more higher wages, ठीक है, to the political organization, ठीक है। And so this is the relationship between them, ठीक है। And what is so political organization का rule क्या है? ठीक है, what they are legally binded by something क्या है, कि उनके पास एक इलेक्शन कमीशन से उनका रजिस्टर होना चाहिए। इंटरेस्ट ग्रुप में जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन सर्टेन एक अथॉरिटी से रजिस्टर होना चाहिए। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, हाँ, उसका मेन डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, राइट? कहाँ पे है इसका डेफिनेशन? या, सो अ पॉलिटिकल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरेस्ट ग्रुप। द रिलेशनशिप बिटवीन देम, रिलेशनशिप मतलब क्या? जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ग्रुप में एक रिलेशनशिप, एक रिलेशन है। सपोज इफ द पॉलिटिकल organization gets elected, the trade union will demand more wages, right? Now this is a kind of relation. And what is the rules and norms that govern their functions? Suppose मैं, जैसे मैंने आपको बोला था, political organization has to get registered, with the election commission to participate in the elections. Interest group, so trade union को एक certain authority के साथ, you know no, they should, like relationship ऐसे बनता है, ठीक है। Now these are the kinds of rules and norms that govern their functions, ठीक है। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स? ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम समझ गए, उसके लेवल्स क्या है? देयर आर मेनली थ्री लेवल्स, वेरी इजी। ओके, फर्स्ट वन इज ग्लोबल लेवल। ग्लोबल मतलब क्या? एग्जांपल WTO, EU। नाउ यूरोपियन यूनियन इज समथिंग, सो इसमें यूरोप के पूरे कंट्रीज रहते हैं, तो टोटल कंट्रीज कितने होते हैं? 27 कंट्रीज होते हैं। बस एक जनरल, एक मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सो लेवल्स, सो पहले होता है ग्लोबल, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? जो बेसिकली पूरे दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, उसके एक सर्टेन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो WTO ही बनाता है। अंडरस्टूड? सो ग्लोबल हो गया। सेकंड वन इज नेशनल। नेशनल मतलब क्या? पर्टिकुलर कंट्री के वो ही रूल्स बनाएंगे। सपोज इंडिया में, सपोज इंडिया पार्लियामेंट,
India's parliament making the GST rule. कुल ठीक है. सो ग्लोबल हो गया, नेशनल, फिर क्या बचेगा, लोकल या रीजनल. लोकल मतलब क्या, जैसे अपने म्यूनसिपैलिटीज हो गए एंड हाई कोर्ट्स हो गए. तो ये पर्टिकुलर स्टेट के रहेंगे. अगर सपोज दिल्ली है तो दिल्ली हाई कोर्ट का ही रहेगा, राइट. हैदराबाद है तो हैदराबाद का हाई कोर्ट रहेगा. बैंगलोर का तो बैंगलोर का हाई कोर्ट रहेगा. सो वैसे वैसे वहाँ के पर्टिकुलर स्टेट के अथॉरिटी वो रूल्स डिक्टेट करेंगे, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, राइट. तो हाई कोर्ट्स. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ सोर्सेस ऑफ लीगल अथॉरिटी. सो सोर्सेस का मतलब क्या है, सोर्सेस ऑफ लीगल, हु मेक्स द लॉस, हु मेक्स इज द क्वेश्चन. Now again this is divided into three parts. This is what somewhat similar to your levels of political systems. So what is the first one? Is supranational. क्या सुपरा है, वाह सुपरा है, अच्छी गाड़ी है. सो सुपरा नेशनल. सो सुपरा नेशनल का क्या होता है, सो बेसिकली अपना जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, ठीक है. और क्या है हमारे पास, हमारे पास पार्लियामेंट्स हो गए, कोर्ट्स हो गए, यूरोपियन यूनियंस हो गया, ठीक है, WTO हो गया. ये सब सुपरा नेशनल है. मतलब क्या है ये पूरे सुपरा नेशनल मतलब क्या, जो बेसिकली पूरे कंट्रीज जो होते हैं, अब एक मतलब दो कंट्री से ज्यादा के लिए वो रूल्स अप्लीकेबल होते हैं, उसको सुपरा नेशनल बोलते हैं, ठीक है. अगेन नेशनल मतलब क्या है, जो वही कंट्री के रूल्स को गाइड करेंगे. एंड द थर्ड वन अगेन लोकल इज द सेम थिंग, ठीक है. जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन करा वही रिपीट हो रहा है, बस इसमें एक चीज फर्क है कि यहाँ पे सुपरा नेशनल बोलते बोल के आ जाता है. ओके, नाउ so we are done with what, first we are done with the definition of political system. Third one is there are three levels of political system, and who makes the laws, again there are three levels which is somewhat similar to your levels of political system. Okay, ये हो गया. Now main concept comes over here. Let I'll just read this and can go here. So now government, okay, so government plays an crucial role for success of the organization, obviously, ठीक है. Now how, the question is how. So it is divided into two parts. Okay, first one is government policy. Okay, second one is legislation. I'll write this as direct legislation. Cool. What do you mean, what, so basically what is the difference between a government policy and a direct legislation? Both sound similar but they are way too different. Don't get confused, काफी easy, right. So what do you mean by government policy is basically government के जो plans है, right, the plans of the governments, the intention, right, which guides the businesses. They do not always create a law. Simple. That's it. Government policy मतलब क्या? They are basically certain kinds of plan, a certain intention which government wants the businesses to follow. They are not the rules of which are set by the government. Okay. Example. Best example in today's world is कार ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ठीक है. सपोज गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी कार ईवी मैन्युफैक्चरिंग बनाती है मैं उन पर लोअर टैक्स कर दूंगी. तो क्या होगा, जो भी आउटसाइड इन्वेस्टर्स है वो ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पैसा डालने को रेडी हो जाएंगे बिकॉज देयर इज लोअर टैक्स, सो दैट दे कैन मेक मोर मनी. दिस इज द एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, राइट. व्हाट इज डायरेक्ट लेजिस्लेशन? डायरेक्ट लेजिस्लेशन इज बेसिकली एक्चुअल, वाह, बोल रूल्स भी बोलना नहीं आ रहा, रूल्स एंड रेगुलेशन. ओके, दीज आर द एक्चुअल रूल्स एंड दीज आर नॉट सम प्लान्स. ये है जो लिखा हुआ है एंड यू विल हैव टू फॉलो. इफ यू डोंट फॉलो सर्टेन काइंड ऑफ फाइन और पेनाल्टी विच इट विल बी पुट ऑन यू. परफेक्ट. एग्जाम्पल, मिनिमम वेज लॉस, ठीक है, हर कंट्री में होता है कि आपको this amount should be given to your what do you call employees which are there in the organization. You cannot give below that minimum wage. Okay, now the last topic comes over here is something called as data protection.
आई क्लियरली एक्सप्लेन दिस इन द लास्ट चैप्टर. पूरा लास्ट चैप्टर इसके अराउंड ही रिवॉल्व हो रहा था कि डेटा प्रोटेक्शन होता क्या है, right? So data protection, again coming back to the basics. So what is data protection, right? Businesses, the business will have a lot of data. Okay, they'll have a lot of data. Now they will have to protect it. So a certain kind of rules and laws should be made to protect the businesses. Otherwise their whole base is gone. Okay, now there is something called as GDPR Act, which was established in 2018 by the European Union. Simple. Okay, नथिंग, उससे ज़्यादा डीप नहीं जाना है. ये GDPR एक्ट क्या होता है? सो GDPR है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट. जनरल डेटा जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट, which was established in 2018 by the European Union, which consists of 27 countries. Right? उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? हम यहाँ पे बस देख सकते हैं. सेम, इट अगेन रिवॉल्व्स की सेफ रहना चाहिए, जो कस्टमर का डेटा है वो एक्यूरेट रहना चाहिए. इट रिवॉल्व्स अराउंड द सेम थिंग व्हिच यू डिड इन द लास्ट चैप्टर, राइट? So used fairly, used for specified explicit purposes, accurate होना चाहिए, kept no for no longer than necessary. A data user is responsible for the security and protection of data, handled in a way that ensures appropriate security, etc., etc., etc. Right? Perfect. Now this GDPR Act. So basically, this is for applicable. Oh shit, applicable for everyone. ठीक है. अब certain, अब suppose because we are studying ACCA, so we need to focus on UK too. Now UK, what do you call, UK Data Protection Act 2018. It supplements this particular act. What do you mean? जब मैं बोलता हूँ supplement का मतलब क्या होता है? Suppose एक UK कॉलेज है, वो स्टूडेंट्स के आईडी, फोन नंबर, मेल आईडी लेता है. तो GDPR एक्ट क्या बोलता है? GDPR एक्ट ये बोलता है कि भाई उसको आप वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए. इट शुड बी केप्ट नो लॉन्गर देन नेसेसरी. ठीक है, अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी रहना चाहिए. ठीक है, दिस इज अ जनरल. नो, हाउ डज यूके डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 कम्स इनटू प्ले? Now, what will the UK Data Protection Act do? So, UK will basically impose specific fines or penalties if if the rules mentioned in the GDPR Act are not followed. Simple. Okay, understood. Now, what are those rules? Right? एक सिंपल एग्जांपल दिया था. सपोज कि सपोज GDPR Act, suppose UK college is using that data for some other purpose which is not mentioned in their what you call policy, right? So here the UK Data Protection Act will impose a specific fine and penalty. Now what will be that specific fine? So here they have written higher of, not right, higher of either 20 euros, 20 million euros, okay, or 4% of global turnover. Whichever is higher, that the company will pay to the authority. Understood? That's it. It is done. This chapter is done. Let me see. Data security, physical risk, human. We have already studied this. See, I'm not doing again the potential threat and the countermeasures, right? There's no point of doing this because I've already done this in the last chapter, and it is a lecture of 40-45 minutes. So if you see that, you'll be done with this. There's no need. That's it. You're done with this chapter. That's it, right? So that's it, guys. Thank you. I'll be getting more lectures. Please subscribe to this channel and tell me anything if I need to improve, and I'll do that surely. Thank you.